any tasks and Yeah, projects I'll there? let you know because see, मैं सबका सीवी दिखाऊंगा. I'll show some 10 to 15 सीवीज दिखाऊंगा मैं, ठीक है? And I'll tell you कि how these people have collected the data. So that you will have a better perspective or better idea आएगा कि हाँ, okay, this is how I can quantify the data. This is what I can mention in my first bullet point, second bullet point, third bullet point. ठीक है? Last के 25 minutes we'll work on the different types of CV. ठीक है? Right now, just understand the things. Okay, guys. Yeah. Now the second point that comes to my mind is verbs. Instead of writing what you are responsible, show them that what you did and what has happened during your job. uh, See, मैं यहाँ शो करूंगा कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का डिफरेंस क्या होता है. जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी बेसिकली वीक लैंग्वेज ही होती है. दिस इज व्हाट आई सीन व्हेन आई टू चेक द सीवीज ऑफ द पीजीडीएम पीपल. बहुत चीजें नहीं होती, ठीक है? एंड आई नो कि उन्होंने काम उतना नहीं किया होता है, सो इट्स वेरी टफ फॉर देम टू ऐड द थिंग्स, राइट? तो सी, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट. या वेन एवर यू आर राइटिंग द सीवी, आपके लिए एक प्रो टिप बताता हूँ. एक्शन वर्ब्स प्लस द थिंग्स दैट यू वर्क एज वेल एज आउटकम, ये सब चीजें आना चाहिए. एक्शन वर्ब वाज लॉन्च्ड a stone-led finance club where I was responsible for increasing peer, just a second, yeah, peer participation by 40% in 3 months. So this is what you can mention it. Now I'm coming with some action words that you should add in your CV. When it comes to leadership, led, directed, superheaded, mentored, champion, orchestrated, ये आना चाहिए. When it comes to starting any moment or starting any project, you should talk about these keywords: created, designed, developed, launched, initiated, introduced. In terms of showing your career trajectory, talk about increase, reduced, expanded, streamlined, accelerated. I'll talk about collaboration and communication. Tab you have to use negotiated, coordinated, facilitated, presented, advice, partner. This kind of keywords should come into the picture, right? अभी सेकंड इसमें अपन चेक करेंगे कि अपन ने क्या क्या देखा. फर्स्ट थिंग इज बुलेट पॉइंट यूज करना है विद द वर्ब. Third thing is you need to talk about data, fact, figure, as well as results of your work experience, of your internships, as well as final year projects. Language जो होनी चाहिए that has to be crisp, clear, concise, and specifically होना है. Don't be generalist. I have seen people making their CV very generic way. वो नहीं करना चाहिए, ठीक है? And avoid the terms such as worked on, involved, help, right? उसकी जगह you can use better terms. लीडरशिप, सी, आपके सीवी से समझ में आता है कि वेदर यू आर अ लीडर और नॉट. आपने किया होगा काम या नहीं किया होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट इफ यू शो ऑल दिस टाइटल्स रिगार्डिंग लीडरशिप, इट विल बी वेरी हैंडी फॉर यू. तो अगर आप क्लब एंड कमिटी में कार्य कर रहे हो, then you can mention about club president, event coordinator, student council, maybe you in your UG, maybe in your work ex. If you have worked on an academic project, जो freshers है उनके लिए बोल रहा हूँ, एकेडमिक प्रोजेक्ट में भले आपने काम थोड़ा सा ही किया होगा, but while writing on the CV, mention that you were a team leader. You were responsible for working in a team where, due to your inputs, team was able to do the task in advance, right? Talk about आप अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप लीडरशिप, टीम लीडरशिप एटीट्यूड शो करने के लिए, आप रिसर्च कोऑर्डिनेटर लिखो कि फॉर द प्रोजेक्ट दैट आई वाज डूइंग, आई वाज रिस्पांसिबल फॉर डूइंग द रिसर्च. I use this publication to find out the research. I did primary and secondary research. So आपको ये बोलते आना चाहिए to the interview. If you are a work person, talk about role that you have. Maybe project owner, process owner, team owner. Then startup and side hustle. Let's say you are working or you are doing side hustling, right? Which I am doing. So in my LinkedIn, I wrote it as a co-founder. I wrote it as a freelancer. So these are the things that you should mention it. And वो चीजें लिखना है एक्स्ट्रा करिकुलर के नीचे. Then community. Talk about NGO experience, which I told you कि आप अभी मैंने तो आपको एग्जांपल दे दिए कि वॉलंटियरशिप करना है तो ऑनलाइन के लिए ऑप्शंस क्या है, ऑफलाइन के लिए ऑप्शंस क्या है. देन फंड रेजिंग इवेंट, वट एवर फंड रेज दैट यू हैड इन योर लाइफ, टॉक अबाउट इट.
नाउ रिज्यूमे के लिए, let's say you have been a part of any club and committee, right? So whenever you are mentioning about that domain expertise, am I audible to you guys? Hello? Your voice is breaking a lot. uh Still my voice is breaking. Is there an issue? Fine now. Is it fine? Okay. Okay, yeah. So let's say if you're talking about the clubs and committees, right? You might be joining any club and committee in the campus, and you should join because you what happens once you join the B schools and once you join the committees, exposure मिलता है. Second thing is you are getting opportunity to show your leaderships, and you can add all these things on your CV. उसकी वैल्यू होती है, सर्टिफिकेशन भी मिलता है at the end of the B school. ठीक है? Yes. So in the clubs and committee, talk about whatever things that you mentioned. Let's say you improved a process or solved a problem. You took the charge of any work. You were responsible for doing some tasks to achieve a common goal. Then whenever you're talking about freelance, right? तो आपको डेटा मेंशन करना है. सॉरी, यस, डेटा क्या मेंशन करना है? लेट्स से you were a part of this club where 30 people were enrolled in this department and I was responsible for leading all these people. आप डेटा मेंशन कर रहे हो, आप क्लब कमेटी का नाम मेंशन कर रहे हो. देन if you worked in corporate, maybe there might be some instances where you had a cross functional collaboration with different teams. So talk about the team, talk about how many people were under you, talk about how you help different set of people, and how much task that you had, right? Then hackathons and sponsorship. See, most of the यहाँ जितने भी 20-25 लोग हैं, आई डोंट नो कि उनके सीवी में हैकाथॉन्स होंगे. ठीक है? माय इंडिया हैकाथॉन और माय गवर्नमेंट हैकाथॉन पे जाके आप बेसिक 2-3 हैकाथॉन कर दो, विच वुड बी हैविंग लॉट ऑफ वैल्यू इन द इंडस्ट्री. ठीक है? अभी जाके आप चेक करो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, हैकाथॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, right? And yes, you can also mention about sponsorships. Some people are coming with one of the best brands in the industry, maybe Bain and Company, Google, Swiggy, Zomato. तो उसकी वजह, और बिग फोर्स, उसकी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है. आई हैव सीन पीपल इन द कैंपस. आई टेल यू द रियलिटी. इन आईएमसी, अगर आपके सीवी पे बिग फोर है, ग्रेट लेक्स आपके सीवी पे बिग फोर है, एज वेल एज दिस अनदर कॉलेज इन एसआईबीएम पुणे. अगर आपके सीवी पे बिग फोर है या टॉप नॉच कंपनीज है व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, आपका सीवी ऐसे शॉर्टलिस्ट हो जाता है. यू डोंट हैव टू पुट एफर्ट्स. ब्रांड की वैल्यू बहुत होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज और फैमिली बिजनेस. लास्टली क्विक टिप्स क्या है? आपको कीवर्ड्स यूज करना है: लेड, इनिशिएटेड, फाउंडेड, चैंपियन, ऑर्गेनाइज. इफ यू आर अ फाउंडर ऑफ एनी क्लब कमिटी, राइट? आपको मेंशन करना है आपने जितनी इंप्रूवमेंट की है, हाउ मेनी पीपल हैव यू वर्कड ऑन, and how much money have you saved, or how much income have you generated through the work. Now next thing, some people who worked in the cross functional domains, and some people would be having a international exposure. I have seen people from the foreign nationals, like Indian nationals होते हैं, वो foreign में जाके तेरा उनका यूजी कंप्लीट करते हैं. When it comes to PG, they came to India. So for these people, some of the, and this is also for working people. आपने ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ वर्क किया होगा, ठीक है? टॉक अबाउट दैट क्लाइंट नेम, talk about what kind of teams that you worked. Let's say some people during the B school days often go for student exchange, right? So student exchange करते हो तो उसका एक leverage तो मिल जाता है आपको, ठीक है? Post that whatever you had in your plate uh, when you worked in this student exchange program, right? Maybe you were responsible for working on an internship, case competition, जो भी competition खेलना है उसको mention करना है. कॉर्पोरेट पीपल गाइस, आपने ऑफशोर ऑनशोर टीम्स के साथ काम तो किया होगा, ठीक है? तो टॉक अबाउट देम. एंड वट एवर प्रोजेक्ट्स दैट यू वर्क, प्रोजेक्ट्स के बारे में थरो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी होगी. सेकेंड थिंग इज, यस, ये बेसिक थिंग है क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन. आप जिस भी टीम के साथ काम कर रहे हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, एचआर, सो आपको बताना चाहिए कि सीवी में कि आई वर्क टुवर्ड दिस टीम्स एंड आई वाज रिस्पांसिबल फॉर हेल्पिंग दिस डोमेन्स, राइट?
आपको डेटा मेंशन करना है, लेट्स से आई हैव इम्प्लीमेंटेड एआरपी सॉल्यूशन, द कॉस्ट ऑफ दैट एआरपी वाज $1 million, मैंने मेंशन किया है. देन आई वर्कड विद मार्केटिंग डिजाइन एंड सेल्स डिपार्टमेंट, मैंने टाइम भी मेंशन किया है. एंड व्हाट टास्क दैट आई डिड, मैंने एक ऐप लॉन्च किया था वो मेंशन किया. ठीक है. आई वाज ऑलवेज अ डिबेटर, सो आई वर्कड ऑन एंड आई participate in some debating competition. I also mentioned there through my corporate journey, right? तो कभी भी आप सीवी में इंटरनेशनल एक्सपोजर मेंशन कर रहे हो तो यूज द टर्म्स लाइक ग्लोबल, क्रॉस फंक्शनल, मल्टी कल्चरल, एंड टॉक अबाउट द डोमेन दैट यू वर्क, the team that you're working, size of the team, budget of the project, as well as the countries that you worked on. Lastly, just a second, how many? Yes, last की 3-4 स्लाइड बचे, उसके बाद मैं डायरेक्ट सीवी पे जाऊंगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है कि फ्रेशर्स दे पुट लॉट ऑफ पैराग्राफ्स, राइट? पैराग्राफ जब डालते हो ना, इट इज वेरी टफ फॉर द रिक्रूटर्स. यू नो आप अचीवमेंट्स भी मेंशन करते हो तो वो अचीवमेंट्स इधर उधर निकल जाती है. एंड सीवी आपका एटीएस फ्रेंडली नहीं होता है. atstracker.com पे जाके आपको हर सीवी आपको चेक करना पड़ेगा, राइट? एंड कॉम्प्लेक्स डेटा बिल्कुल नहीं डालना है. बेसिक सिंपल स्क्रैच डेटा होना चाहिए. उस दैट जब भी मैं पढ़ रहा हूँ या जब भी रिक्रूटर पढ़ रहा है, ठीक है, बुलेट पॉइंट अच्छे से दिखना होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लीन, इजी टू रीड होना चाहिए. देन अभी मैंने बोला था कि पैराग्राफ टाइप नहीं होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफन राइट कि पैराग्राफ से उनको लगता है कि मेरे सीवी में बहुत इंफॉर्मेशन डालूंगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर द रिक्रूटर्स. नहीं, रिक्रूटर डोंट वांट दिस इंफॉर्मेशन. मैंने एग्जांपल दिया है. मैंने लिखा है कि आई वर्कड ऑन इंप्रूविंग द कंपनीज कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, in which helped the reduce delays and made the system more efficient, and I also interact with the clients to understand their concerns. ये बेसिक हो गया. नाउ बुलेट पॉइंट में कैसे लिखा मैंने? I, मैंने पहले बोला कि यू हैव टू स्टार्ट विथ कीवर्ड. आई इम्प्रूव द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, कॉमा, आई रिड्यूस एवरेज क्लाइंट एक्टिवेशन टाइम by 25%, engage 15 plus clients to identify and resolve onboarding friction points. Right? क्लियर कंसाइज दिख रहा है कि मैंने काम कौन सा किया है, डेटा भी डाला है मैंने, so that recruiters who's gonna see your CV, he'll ask ki, okay, tell me how you have reduced the activation time by 25%. तब आपके पास उसका डेटा होना चाहिए. ठीक है. बुलेट पॉइंट रखो, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होना चाहिए, लेड, रिड्यूस, क्रिएट, एनालाइज्ड, नंबर एंड आउटकम इम्प्लीमेंट एंड डिफाइन होना चाहिए सीवी में. Was that? Yes. Common mistakes. Why I made like this? कि मिस्टेक्स क्या होते हैं लोगों से. लोग बहुत फैंसी फॉन्ट एंड कलर यूज कर सकते हैं. इट लुक्स अनप्रोफेशनल. जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए इट्स नॉट गुड फॉर यू. सेकेंड थिंग इज पर्सनल डिटेल्स. पर्सनल डिटेल्स में डोंट मेंशन रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ में नहीं मेंशन करनी. मैरिटल स्टेटस, इट लुक्स लिटिल बिट अनप्रोफेशनल. पैसिव वॉइस में नहीं निकला है, इट लुक्स लिटिल बिट वैग. It lacks ownership and impact on the person who is looking at your CV. Won't add long paragraphs. It is very hard to see the paragraph and the information which is present there, right? And whatever you are mentioning, it should be crisp, clear, concise. Many times recruiters often get confused, so इसकी वजह से inconsistency बढ़ जाती है, right? Now I'll show you difference between passive and active voice क्या होता है. I was involved in organizing an event for 300 students. उसी को मैंने active voice में लिखा है as I organized an event attended by 300 students, managing logistic and sponsorship. तो अच्छा लग रहा है, क्रिस्प लग रहा है, कंसाइज लग रहा है. वेयर आई एम यूजिंग डेटा, मैंने जो काम किया है वो भी दिख रहा है. रिज्यूमे में स्टाइलिश फॉन्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. एंड डोंट पुट लॉट ऑफ नंबर्स. मेनी टाइम्स पीपल एड लॉट ऑफ नंबर्स, राइट? वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए ताकि वन लाइन में समझ में आना चाहिए. नाउ आई शो इट टू यू रिज्यूमेस. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? हेलो? Yes, sir. ओके. सबसे पहले मैं कवर लेटर दिखाऊंगा. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कवर लेटर, वन ऑफ माय फ्रेंड राइट नाउ वर्किंग इन बीसीजी.
उसका कवर लेटर है, मैं वो दिखा दूंगा कि कैसे कवर लेटर बनाना होता है। बी स्कूल में कुछ कुछ कंपनीज मांगती है कवर लेटर। सो ऐसे कवर लेटर बनाना है और आप लिंक्डइन पे भी डाल दो, ठीक है। वेन एवर यू आर राइटिंग फॉर बीसीजी, कोई भी नॉर्मल बी स्कूल ले लो, लेकिन आई चोस्ट आउट की मैंने टॉप इंस्टीट्यूट ले लिया, ठीक है। तो आप बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिख रहे हो तो हियर आप फॉर्मेट देखो, डेट डाला है, रिक्रूटर मैनेजर और कंपनी का नाम, सब्जेक्ट, देन डियर सर मैडम वट एवर पर्सन दैट इज present there, and I'm writing about that company, this is what I think about it. For a long time I attracted to the consulting space. See, I wanted to get into consulting, so I made it according to the yes, Rahul, yes, we will definitely take your query at the end of the session, ठीक है। I think, और I guess your older slide मेरी, is ओके ओके ओके, नो वरीज नो वरीज नो वरीज, ओके, अच्छा 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 your अच्छा, previous. Yeah. ओके, यस, इज द स्क्रीन विजिबल टू यू राहुल? Yeah, now it is visible. या, या, if you are applying for consulting firms, right? तो देखो यामिनी, thank you for considering my application for the role of BCG. For a long time, I have been attracted to consulting space, even more with BCG because of the firm's commitment to create an unrivaled environment for exceptional people. See, I talked about the company itself. Then why I should get opportunity to get a seat into your consulting domain. तो वो भी mention किया है, ठीक है। On then I mentioned about my entrepreneurship. मैंने before MBA Unfiltered, I worked on two startups. So I talked about that startups, ठीक है। Then I talked about skill set, problem solving, decision making, critical thinking, और मैंने कहाँ यूज किए, देखो यार, clearly I am mentioned that I was working with this domain. I was working with as a technical audit of Southeast Asia's longest tunnel. वहां मैंने जो जो काम किया है, मैंने सी, आपको ब्रेक डाउन करना है आपके वर्क को, ठीक है। एज, मनी, डेट, वर्क, ऐसे प्रॉपरली दो 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 तीन तीन लाइन डिफाइन करना है व्हेन इट कम्स टू कवर लेटर, ठीक है। देन द सेकंड स्किल आई मेंशन इज कोलैबोरेशन। आप डिसीजन मेकिंग यूज कर सकते हो, या प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बेटर रहेगी मेरे हिसाब से, ठीक है। कोलैबोरेशन में मैंने क्या लिखा है कि आई वाज इन्वॉल्व इन एंटायर स्ट्रक्चरिंग। सो इम्पैक्ट मैं शो कर रहा हूँ कि कोलैबोरेशन के थ्रू मैंने क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। How many people were there, how many departments were there, what I used to do. I used XYZ framework. X, what is the situation, y, who were stakeholder that were present in that situation, what was the problem that to solve, what was the goal that I achieved, z, what was the outcome that I get out of the situation, and मैंने वो सिनेरियो बनाया मेरे वर्क के लिए। एंड लास्टली आई मेंशन कि मुझे आपके डोमेन में काम करना है। सो दिस इज व्हाट माय कवर लेटर लुक्स लाइक, ठीक है। नाउ we'll look down to the CVs, क्योंकि CVs बहुत मैटर करेंगे। Just a second, guys. I'll take one by one CV of different B schools, so you will get a better idea. थोड़ा टफ होगा तुम्हें सबसे पहले समझने के लिए कि मैं कैसे CV बनाऊं, ठीक है। I'll take the CV of, let's say, freshers का CV लेता हूँ, ठीक है। फिर वर्क एक्सपो people का भी लूंगा, and I also take the CV of the people who have been in the industry from 6 to 8 years. Yeah, it looks little bit vague for you. Yeah. Is the CV visible to you guys? Please say Yeah, yes it is or no, visible. guys. Yes. Yeah, it is visible. Yeah. I have taken this CV. ठीक है। देखो, the name of the person is ऋत्विक गौरी। उसने आपका उसका फोन नंबर मेंशन किया, लिंक्डइन आईडी। आप क्लिक करोगे इस पे, तो आप लिंक्डइन पे डायरेक्ट जाओगे, ठीक है। रिक्रूटर्स ऑफन चूज दिस काइंड ऑफ थिंग। तो दिस पर्सन हैज डिड हिज एमबीए, उसने उसका परफॉर्मेंस मेंशन किया है। नाउ विल टॉक अबाउट द इंटर्नशिप्स। तो इसने ईवा में इंटर्नशिप की है। देखो, एट द एंड ऑफ एवरी पॉइंट, असिस्टेड, क्रिएटेड असिस्टेड, कंडक्टेड, आप देखो मैंने पहले बोला था कि वर्ब यूज करना है। ही टॉक्ड अबाउट एआई फाउंडेशन,
Then in that foundation, he was responsible for development of coffee table, and he talked about the tool that he worked. Then he has mentioned ki, he created 15 Microsoft Word documents of email communication, draft mailers, and toolkits. Here, that person is mentioning about his technical work. You can talk about this thing. आप हर लाइन में देखो, डेटा दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, कंपनी का नाम दिख रहा है, work that he, whatever work that he was working on, and tool and technology दिख रही है. ठीक है. And now we'll talk about internship again. This was the basic internship. Abhi, this was the paid internship. So what he mentioned, he worked on a greenfield startup project called Nilo Electric Automobile under the business development director of development of a pan India dealer distribution network. So explicitly समझ में आ रहा है कि okay, he worked in this company where he was business development director, and this is what he did. उसके बाद मेरे को क्रॉस क्वेश्चन आएंगे. उसके बाद रिक्रूटर पूछेगा, okay, can you let us know about what you did in that Nilo Electric Automobile apart from this work, right? How you developed the pan India dealer distribution network. तो दिस काइंड ऑफ क्रॉस क्वेश्चन आएंगे आपको, तो उसके भी आपको आंसर बना के रखना पड़ेगा. एवरी पॉइंट दैट यू आर मेकिंग, उसके 4 से 5 पॉइंटर होने चाहिए, और 4 से 5 क्वेश्चन उस पे आएंगे, क्रॉस क्वेश्चन पक्का आएंगे. ये लेके चलो. बी स्कूल इंटरव्यूज आर वेरी इजी टू क्रैक. आई क्रैक ऑलमोस्ट 35 बी स्कूल्स, बट बहुत इजी था. It's very tough to crack corporate interviews, right? Now, he has mentioned assistant in converting investment of 50 crore rupees, pitched the proposition of top 50 prospects and conducted 65 cold calls, right? He has mentioned about his corporate experience, right? Excel use किया है, tools दिख रहा है, Excel में क्या काम किया है, cold calling का, see, it is a combination of technical work plus marketing work. तो marketing analytics का CV दिख रहा है, ठीक है? Now, POR, position of responsibility. See, director of outreach. So in the GGU Investment Society, he worked there for almost 1 year. मैंने पहले बोला है, ब्लैक लेटर या ग्रे या ब्लू में होना चाहिए आपका फ्रंट. जुले से यहाँ तक मैंने डिफाइन किया है. देखो कितना आउटलाइन बढ़िया दिख रहा है. ठीक है. In the JGU Investment Society, he inducted and led a team of 8 members. He conducted outreach of multiple colleges, and he founded a podcast. Post that, he drafted a committee member. He was a student intern, and he was a member of student grievance redressal cell. So whatever position of responsibility that you had, you need to mention it. Now I'll talk about the accolades. So he was merit come scholarship student. Then he was awarded by Spirit of GGBS, and it comes at a gold tier delegate. So these are the award that he mentioned. Award, award की value क्या है, price क्या है, और authority. He has mentioned all these things, right? फर्स्ट रनर हो, विनर हो, आपको मेंशन करना है. फर्स्ट प्राइज हो, या इफ यू गॉट अ बेसिक अवार्ड, यू कैन मेंशन ऑल दिस थिंग्स. लास्टली, स्किल्स एंड हॉबीज. यू मेंशन अबाउट द टेक्निकल स्किल सेट. लैंग्वेजेस का भी एक डिफरेंट पोर्शन आता है, राइट? लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आपको बतानी पड़ेगी. पोस्ट दैट द स्पोर्ट्स दैट ही प्लेड, हॉर्स राइडिंग, बिलियर्ड्स, योगा, पावर लिफ्टिंग, एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. तो लेट्स से इफ यू आर मेंशनिंग रिगार्डिंग योगा, तो आपको इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा, advantage disadvantage of yoga, when yoga day is celebrated in India as well as world, what are the different forms of yoga. तो हर चीज आप डाल रहे हैं ना, उसके 15 to 20 कॉस्ट क्वेश्चन के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा. बेसिक सीवी हो गया. नाउ अगेन आई कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट? कंसल्टिंग वाले लोग, ठीक है. कंसल्टिंग में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ jargons आर यूज्ड. आई टेक इट दिस jargons. Whenever you are yes, am I audible to you guys? Yes, you are. Yes. Yeah. If you're getting into consulting, or if you're getting into general management, these are the keywords. मैं सब भेजूंगा, मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है. Administration, arrange, chaired, coordinated, directed. These are the keywords that you need to use. Suppose that see, आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप ये कीवर्ड्स ले सकते हो: built, chartered, created, design, develop,
when it comes to increasing efficiency, productivity, profit, sales, revenue, customer satisfaction, you can use achieve, advance, amplified, boosted, capitalize, generated, reconciled, reduce, saved. Suppose that if you are mentioning regarding in your organization और आप जैसे कमिटी क्लब में काम कर रहे हो तो उसका डेटा मेंशन करना है सीवी में, तो आप ऐसे मेंशन कर, आप ये ऐसे कीवर्ड यूज कर सकते हो: मर्ज्ड, मॉडिफाइड, ओवरहॉल, रिफाइंड, रीफोकस्ड, रिहैबिलिटेड, रीमॉडल, रीऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, दिस आर द कीवर्ड्स। सो आप ये कीवर्ड देखो, आई शेयर द डिटेल्स टू यू। मार्केटिंग के लिए अलग कीवर्ड्स है: एनालाइज, असेंबल्ड, ऑडिटेड, कैलकुलेटेड, क्वांटिफाइड, रिपोर्टेड, सर्व। राइट, बेसिक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ आई टेक अनदर सीवी। ठीक है, this is the CV of gold medalist of one of the best P school in the country. One of the confidential CV, but I got it just because I had a connection with that person. He's having almost 1.5 lakh views, followers on LinkedIn as well as YouTube पे भी आप चेक कर सकते हो। सार्थक वर्मा, he is the gold medalist of ISB. Am I audible and visible to you guys? Hello? Your screen is not visible, I guess. Oh, screen is not visible. Okay, just a second. Yeah, this is the CV of ISB gold medalist. Is this visible to you? No, not visible. Still not visible. Now it looks visible. Yeah. Can anyone tell me? Yeah, now it is visible. Yeah. Can anyone tell me while looking at CV, what do you think? क्या आपको दिख रहा है? Shashank, what do you think? Just look at this CV. This is the CV of ISB gold medalist, a guy who cracked almost 1.5 crore job this year. So sorry for that number. I need to omit that number. Otherwise, you'll call that person. Don't call on this number. Yeah. Yeah. So yeah, he talked about ISB, right? He was ranker 8 in his seventh term. He was a president. See how उसने कैसे mention किया? He was a president of this club. He has quantified everything. Yes, this is what you need to mention. आपको define करना है, आपको लोगों से आगे बढ़ना है. So these things were not available to me when I was preparing my MBA examination. मैं जब 5-6 महीने when I invested in the industry, that day I made my CV like this, right? तो आपको ये चीजें बहुत पहले पता चल रही है, ठीक है? See, mention about PPA, pre-placement offer, talked about his domain, talked about CFA, he talked about case competition that he played, right? Where he used GTM, go-to-market strategy. He worked with tier 2, tier 3 customers. He was working in consulting domain. 200-300 market research help किया बच्चों को, ठीक है? Where he quantified the data. While his BBA he completed from SSBS, Shahid Sukhdev College of Business Studies, where he was having 8.8 CGPA, but he was ranked 3 in the batch. There, he was the gold medal. He got a gold medal. Then he worked in urban company. Summer internship के बारे में बताया. This is very confidential. Still, I'm showing it to you. मैं दे भी दूंगा. I'll give it to you on only one distance कि आप भी किसी के ना दोगे, ठीक है? That is very confidential CV. Then he has CFA level 1 completed. Those people who are working for CFA. See, at the end of everything, उसमें देखो, यहाँ देखो. Then you can see here, he has mentioned about the date where, or as well as the year where he completed the things, right? Yeah. Now we look down to the work experience. He worked in car देखो as assistant manager, Sequoia Capital. कंपनी के बारे में लिखा, स्टार्टअप था तो स्टार्टअप की बैकिंग कौन सी थी, स्टार्टअप का वैल्यूएशन क्या था, कब से कहां तक स्टार्टअप में वर्क किया वो लिखा, एंड उसका वर्क लिखा, रिपोर्टेड टू सीईओ, राइट? वर्कड ऑन डिफरेंट डोमेन्स एंड ही मेड जीटीएम, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी. उसके बाद अचीवमेंट देखो, ही सिक्योर्ड फास्ट ट्रैक प्रमोशन 9 months, उसने प्रमोशन की भी क्वांटिफाई किया. उसके बाद ही गॉट आउटस्टैंडिंग अचीवर अवार्ड. Then he talked about engage to win the delight award. He talked about decision enabler. He talked about how many team that he was working on. ठीक है, that was first achievement.
सेकेंड अचीवमेंट क्या थी कि कंपनी में यू आर डूइंग लॉट ऑफ टास्क, आप डेटा हैंडल करते हो, आप बिजनेस प्लानिंग करते हो, आप टीम मैनेजमेंट कर सकते हो, आप क्रॉस फंक्शनल कोलाबोरेशन कर सकते हो। तो ही टुक एग्जांपल ऑफ बिजनेस प्लानिंग एंड ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। बिजनेस प्लानिंग में देखो, राइट, व्हाट ही मेंशन, he made a business planning for new vertical where he increased the revenue by 1 crore. He talked about the dealers that he worked, he talked about services that he provided. Second thing is insta loan, उसने जो भी नए काम किए इंडस्ट्री में वो मेंशन किए. He talked about the plans that he had. Then कंपनी में दूसरा काम that he worked on, which is P&L management and category. Just look at it, how much data that he mentioned, how much. सी आपको जार्गन्स भी यूज करना पड़ेगा. लेट्स से ही मेंशन द जार्गन रिड्यूस बाउंस रेट. आप गूगल पे जाके चेक करो बाउंस रेट क्या होता है, मैं अभी बताऊंगा. ही टॉक्ड अबाउट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर का एक्वायर कर रहे तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, ठीक है. देन ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, आप डेफिनेटली दो चीजें मेंशन करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, डिसीजन मेकिंग, ठीक है. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेड प्रोसेस चेंजेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी. तो उसने मेंशन किया कि पोर्टफोलियो कितना हैंडल किया है, पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या थी, हाउ मच डेटा ही वाज हैंडलिंग, कितने डीलर्स थे, कितना बिजनेस की डिमांड थी, वैल्यू क्या थी बिजनेस की, राइट. नाउ व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप पोजीशन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, here he has mentioned he's having his own YouTube channel. So he mentioned about one-on-one mentorship. He onboarded 70 mentors and gave the free career guidance to 300 plus people. He started new channel, career capsule and college workshop. uh, Talking about other achievements as well as position of responsibility that he had is writing. Writing mein, he designed ISB's first virtual work bookshop. He is the editor in chief for Economic Decoded. He write one of the best blog which was came into the Digital India Summit Awards. And he also talked about his achievements. He was the winner at national debate competition which is organized by IIM Indore, annual debate conflict by Saint Stephens. So these are the things that you should mention it. मुझे पता है आपको बाउंसर जा रहा है, राइट, यस, बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. यू शुड नो ऐसे सीवी बनता है, दिस सीवी कॉस्ट 1.5 करोड़ रुपीस. बी स्कूल में मैंने देखा है, टॉक अबाउट ग्रेट लेक्स, द गाय गॉट वन ऑफ द बेस्ट पैकेज, उसका सीवी ऐसा ही था, राइट. हाई पैकेज हो तो ऐसी चीजें आनी चाहिए. यू हैव टू वर्क फॉर इयर्स टू मेक दैट सीवी, ठीक है. ओके, लुक डाउन टू द नेक्स्ट. वैभव पारिक, he is also one of the best candidate. दूसरा फॉर्मेट सीवी का, ठीक है. he is also a gold medalist in ISB. why I'm taking ISB की एग्जांपल ऐसे सेट कर रहा हूँ कि आप इसका 30-40% भी करोगे ना आपकी बी स्कूल में, यू आर सेट फॉर लाइफ. मुझे एक्सपेक्टेशन है इतने हाई रखने की ताकि आप इतनी चीजें काम करो, ठीक है. दिस गाय ऑल्सो टॉक्ट अबाउट, सी इसने थोड़ा क्लटर नहीं लगा, उसने भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, बट ही मेड अ बोल्ड जार्गन्स. एजुकेशन में ही टॉक्ट अबाउट ISB's एजुकेशन वेयर he was a national winner, national finalist. Then he talked about his IIT background because he was IIT grad. तो IIT BHU में काम किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, CGPA उसका इतना था. टॉक्ट अबाउट KPMG OAO. देखो ब्रांड देखो, भले ही वो ब्रांड का मेंशन कर रहा है, देखो नेशनल विनर बोल्ड किया है, PPI बोल्ड किया है, टॉप 4 परसेंटाइल बोल्ड किया है, IIT का नाम बोल्ड किया है, CGPA बोल्ड किया है, KPMG OAO बड़े ब्रांड्स आगे बोल्ड किया है, ठीक है. रैंक 74 इन द स्कूल, फुल वेवर ऑफ स्कॉलरशिप. आपको ये चीजें बोल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है. वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस में उसने मेंशन किया है कि एयर ब्लैक सैफ पार्टनर पोर्टफोलियो में उसको प्री एमबीए इंटर्नशिप लगी थी. वहां जितना भी काम किया है, ही मेंशन यू नो he received an offer, he worked with 20 plus experiments, he came in the top 3 travel markets. Then achievements, he got a individual spotlight of top 5%. आपको ये सब चीजें खुद के बारे में रिसर्च करके बनानी पड़ेगी सबसे, राइट. इट वोंट इट, आई नो दिस विल टेक मंथ्स. मुझे खुद से ब्रेनस्टॉर्म करने, मुझे समझने के लिए इट टुक ऑलमोस्ट 5 months. और मुझे मिनिमम 15 days लगे कि हर चीज मुझे बनानी पड़ी. इनिशियली आई नोट डाउन इन माई नोटबुक, पोस्ट दैट आई पुटेड ऑल द डेटा इनटू
LLMs चैट जीपीटी को दे दिया मैंने, अच्छा फॉर्मेट बना लिया, फिर सीवी में डाला, फिर उसके बाद मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया. दिस इज हाउ आई मेड इट, राइट. यस. नो वरीज, मैं भेज दूंगा इसका फॉर्मेट गाइस, नो नीड टू टेक अ फोटो एंड ऑल. या मैं भेज दूंगा, बट डोंट शेयर इट टू अदर पीपल बिकॉज इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, राइट. यस. You can mention about yes, he has mentioned about healthcare domain, firm contribution, and extracurricular activities में इसने define किया है कि he initiated a peer to peer learning session, vice president था AISCC वाराणसी का, student organizer, he led a team of 40 people. So all these things should come into the CV. ठीक है. Second CV हो गया. Working professional के लिए, the people who worked in the industry. I think I need to take one more sessions. तो सेम लिंक पे ज्वाइन करना पड़ेगा आपको. या. Yes. I think the format has opened or not. Let me check it out. Yes, this is also a CV of one of the best candidate. तो वही मेंशन किया है कि whatever that he had, ये टॉप डाउन अप्रोच, एजुकेशन के बारे में, वर्क एक्स के बारे में, देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. ठीक है. Guys, I think yes, we are going to end this session within 2 minutes. तो काम करते हैं, we'll end this session and join the same link again. Okay. Yeah, 1 minute is remaining. Any question? Yeah, you were telling how they will verify our quantifiable achievements, like in terms Yeah. of work. तो And in my case, let me tell you, I'm directly recruiting to client, and in my organization, no one knows what I'm working on. okay. Okay. They are just Yeah, generating I'll tell you one revenue. trick. I'll tell you one trick. Whenever you're mentioning all this data ना, आपको मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑफन लुक फॉर अ कोवर्कर. ठीक है. आपके मैनेजर का नंबर नहीं देना है, आपके कलीग का नंबर देना है, एंड टेल दिस थिंग कि यू गोना गेट कॉल फ्रॉम द रिक्रूटर. दिस इज व्हाट आई डिड. Some data I faked it out, right? 80% data was crystal clear, but some data I faked it. So what I did, I mentioned the one of my coworkers number. They called him, and I called him almost 2 days ago. Ki this is got, you're gonna get a call from the recruiter. So just tell them that I was working this thing. So उसमें explicitly mention किया, and yes, yeah, it was easy for me, right? But this is for the people packages which are more than 50 LPA. उसके नीचे जो भी पैकेज आएंगे ना, वो चेक नहीं करते, right? Yes. Any question apart from this? And is there something that you would suggest from client end? Should we get recommendation on LinkedIn or anything useful Yes. or some Yeah. appreciation letter from them? It will be. All the people who are present there, guys, मैं एक चीज बोलूंगा कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं ना, उनको अभी बोलो कि मुझे लिंक्डइन पे एक रिकमेंडेशन लिखिए. मिनिमम 2 रिकमेंडेशन तो होना चाहिए. ठीक है. टॉक टू योर मैनेजर, टॉक टू योर कोवर्कर, एक लिंक भेजो कि रिकमेंडेशन की, और बोलो कि मुझे रिकमेंडेशन अभी का अभी भेज दो, राइट. सो यस, मिनिमम 2 तो रिकमेंडेशन होनी चाहिए. पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई नो दे आर नॉट क्रिएटेड द लिंक्डइन अकाउंट, तो लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करो. एंड दूसरी चीज, ask for your peers and as well as the students who used to work for recommendation. Okay. Yes. Okay, guys, join the same session again.